Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hey guys, what's up? This is Simran welcoming you in a live chat session with Ashi Khanna. Ashi is going to be joining us for this live. Ashi is a video creator. She has a YouTube channel. She has a huge fan following on TikTok and Instagram. Yes, she's a content creator and if you don't know that already, I'm sure a lot of you all know her and have seen her work. She is really good with the kind of content that she creates on YouTube. There are challenges, there are a lot of fun things. She has a super cute dog. जिसका birthday vlog was her last video on YouTube. If you watched that, let us know. Basically, I wanted to give a gist about her so that you can start sending me your questions for her. And yes. Hi. Hi Ashi, welcome to the live and welcome to India Forums. We Thank always you. had a plan to do some segments with you on YouTube, but nevertheless, I we are know. starting off with the Instagram live. And yes, we have a lot of people joining in. Guys, I would request कि आप लोग questions भेजना शुरू करो. And till then, I'm going to ask Ashi, how is her lockdown Yes. situation going? Ooh, एक Okay, सेकंड there are पहले मुझे some हटाने दो. filters. No, I don't want. Yeah. So lockdown though I think for me it's not very like out of the box because whenever I'm in Delhi I usually stay at home only. So it's not like बहुत मुश्किल है मेरे लिए या कुछ ऐसा है. Although Right. I'm missing Mumbai a lot, like a lot, because it was like a monthly thing to go to Mumbai and meet everyone there. So that is True. something I'm really, really missing at the moment. Otherwise, I think it's just my normal life. I don't even know एक महीना कहाँ चला गया. But with this lockdown situation, we see a lot of y'all, like especially content creators, कि आपका काम double हो गया है, बड़ा हो and you गया. are Yeah, that's creating what I. more content now. Yeah, that's actually the same thing what I said in my YouTube video अभी recent वाला भी कि हमारा I think कि लोग अब twice as hard they are trying कि जितना content हो सके उतना वो अपनी audience को दे because सबको पता है सबको content का भी need है. So इसलिए वो सबको मालूम है इसलिए लोग और content बना रहे हैं क्योंकि सबको पता है कि अच्छा जा रहा है सबको मजा आ रहा है मतलब I think this is the time जब audience ज़्यादा connect भी हुई है to all the creators rather than before. So it's a good True. thing. एक aspect अच्छा है इसका. आशना को भी कल मैंने बोला दैट जैसे ही हम YouTube खोलते हैं ना तो डैम फैम के एक ना एक मेंबर का नया वीडियो आया ही होता है. True, because now all of us, like almost all of us are on YouTube, like individual channels. तो अब ऐसा होता ही है कि रोज ना रोज किसी ना किसी का होता ही है पोस्ट. So एंड आज yes, तो डैम फैम के चैनल पे भी नया वीडियो आया विद लाइक 6000 yes. balloons in the video. I miss that, but I really enjoyed watching हाँ. the video. But tell me where did this idea come from? And initially, like, किसका thought था that we all should get together and start a channel? I think कि I have answered this before also in my life as well because ये लोगों का बहुत common question रहता है. So this happened because of the audience that we have actually. That is the सच्चाई कि हमने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया था मतलब हम तो यार नॉर्मली ऐसे मिले और दोस्त बने ग्रेजुअली एंड वी कनेक्टेड जस्ट वो क्लिक हुआ एंड वी कनेक्टेड एंड हमारा इतना बड़ा ग्रुप बन गया ऐसे और सबके इंडिविजुअल चैनल्स तो बनते रहे बट देन फाइनली व्हेन people started commenting and pushing us ki you all should come with a collective channel. So then when we thought about it, we were like, why not? Let's just go for it. Like it's a very great idea. Like अगर हम implement कर पाते हैं, इसको execute कर पाते हैं, so I think it's going to be a success. So that's how it happened. There is Insha Rahimran asking, what's your favorite midnight snack? Oh, there's a video coming up on that, guys, by the way. My next video topic is that only quarantine late night snacks because I've been eating a lot and I think all of us have been eating a lot these days. मतलब हद से ज़्यादा पागल ही हो गए हैं सब. So I have been eating bread pizza. I don't know why. I just go to the kitchen at 2 a.m. and I make bread pizza फटफट से. And Maggie तो सबका ही है. I think Maggie सबका go to snack है. But apart from that, bread pizza. There is Gayatri asking, Ashi, when did you actually start focusing and taking social media more seriously? And love from Pune.
लव फ्रॉम दिल्ली, लॉट्स ऑफ लव। अच्छा, सो एक्चुअली मैंने 3 दिन पहले ही चेक किया कि मेरा इंस्टाग्राम कब से मेरा अकाउंट है, एंड आई वाज शॉक्ड दैट इट्स फ्रॉम 2014। एंड आई वाज लाइक शिट, मैं बचपन में ही अकाउंट खोल के बैठ गई थी। बट यस, आई थिंक सीरियसली को जब मुझे एक्चुअली पता चला कि यस यू कैन बिल्ड अ करियर आउट ऑफ दिस, आई थिंक इट्स बीन 3 years that I've been completely into the social media game. Well, almost 3 years. पूरा पूरा हाँ. Right. There is, acha, this question is also asked a lot of times कि how did you meet everybody from the Damn Fam, and you know पहला कौन था, like the first person you met? We have a video on that as well, guys. But I'll answer कि I think हमारे almost not everybody but almost जो भी है ग्रुप में वो musically जो ऐप था, former TikTok app. So that's how we met. And the first, is that Rishabh असली वाला? And the first person that I met was Manav and Arsh. Rishabh, don't worry. I am not answering the whole thing. That's what I said. Video coming soon. कह रहे नहीं. अच्छा, he's writing no, Ashi. He's writing no. नहीं, हम उनसे पूरा नहीं बुलवाएंगे. हाँ, मैं बोलती भी नहीं हूँ, लोग मुझसे सब पूछते हैं, but अच्छा, there is Amruta asking and so many other people कि आपका अगला वीडियो कब आ रहा है? On my channel or Damn Fam की बात हो रही है? Your channel. My channel, I think I'm gonna post Monday, Tuesday, Wednesday में से एक दिन. Sorry, मेरा फिक्स नहीं रहता, जब मैं एडिट करती हूँ मैं उस दिन डाल देती हूँ अगले दिन. There is Tanu asking you, please ask her about her inspiration. Okay, so I think I really look up to Selena Gomez because not only she's, मतलब मेरे दिमाग में पहले उसका करियर नहीं आता, मेरे दिमाग में आता है how down to earth and humble she is, and the barriers उसके लाइफ में जो थे, like the operations she went through and everything, so that really you know hits me, like मुझे बहुत दिल से connect होता है उसके साथ, not because of how successful she is, that is also a point to be considered, but otherwise I think she's a great inspiration for me. अच्छा, दिस इज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. बिस्मा पूछ रही है, अगर आपको डैम फैम के कोई एक मेंबर के साथ अपनी लाइफ स्वैप करनी होती तो आप किसके साथ करते? Definitely Rishabh. I really want to know what goes on in his head. मुझे सच्ची में जानना है कि वो क्या सोचता है और क्या बोलता है, क्या करता है, उसके दिमाग में चलता क्या है. मेरे को बहुत मन है कि उसके साथ मैं लाइफ स्वैप करूं. अगर मुझे चांस मिला, डेफिनेटली ऋषभ. There is Parya asking when is Ashi shifting to Mumbai. अच्छा, जब से आशना का प्रैंक वीडियो आया है, she mentioned कि Ashi is going to shift and all of that, तब से everybody is asking कि when are you Because तब से coming to सबको Mumbai. श्योरिटी हो गई ना कि हो रहा है. हो रहा है. But yes, I was planning to shift to Mumbai earlier as well, but then some fuck up happened, and then अभी lockdown happened, so I don't think अभी थोड़ा time shifting का I'm thinking. But Right. in the future, yes, I am planning. तो अभी मैं exact नहीं बता सकती हूँ. There is Rahat Khan asking what does she feel about Dilli Ki Ladki, and also कि the song has hit 3 million, over 3 million. Yeah, I think everybody must have realized what I felt by watching the reaction video. हाँ. Because I was so speechless. I could not say anything, but मेरे आँख से सिर्फ आंसू ही नहीं करते, मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी. Because it was such a sweet gesture, and I don't think I still have any words for that. I just get very emotional while listening to that song, and I'm so proud of him that. But now he also has a second song which has gone Yeah, live. yesterday. So proud. I think all of us are very happy. Amazing. And you know, also there are people asking, एक सेकंड, कहाँ गया ये क्वेश्चन? हाँ, कल के आशना वाले लाइव में भी पीपल वर आस्किंग कि आस्क देम कि डैम फैम के मेंबर्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं वो लाइक फ्रॉम वेयर डज दिस कम, एकदम अलग अलग एक्सप्रेशंस होते हैं. आई थिंक हमारा कोई एक बंदा इनिशिएट करता है, कोई एक बंदा ऐसे लाता है नया कुछ ऐसा, और वो इतना यूज करता है, जैसे अर्श डज दैट, ये वाला थिंग बहुत ज्यादा इतना करता है कि आई थिंक अब हर बंदा इन द ग्रुप डज दैट, इंक्लूडिंग मी. So it just happens like that, you know, one person brings एक कोई ऐसी हैबिट अजीब सी, एंड इतना कर करके सबके ऊपर लग जाती है वो आदत. So ये like ऋषभ का सबसे लगी है वही
ये इतना आ जाता है ना ग्रुप के अंदर सबका, तो फिर वो सबका ही बन जाता है लिंगो सेम. There is Shubhi asking, what is your main goal? Acha, so like probably she means ki because you are on multiple platforms, what is like eventually like what are you aiming for? I think this is the only thing I want in life. कि जो भी मैं कर रही हूँ, I think I'm gonna go ahead in this, and there is no fixed target as to what I'm doing अभी. So I just want कि जो चल रहा है बस काम अच्छा चलता रहे, and I just want people to know me. Like the reason I started YouTube was कि Instagram पे मेरी एक अलग इमेज होती है, so I wanted कि मैं रियल जैसी हूँ ना वैसी लोगों के सामने आऊँ. So that is why I chose YouTube as a platform, and I think जो लोग मुझे YouTube से जानते हैं वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ असली में, कैसी हूँ. And जो सिर्फ इंस्टा पे देखे होंगे वो इतना कोई और कुछ और तरीके से जज करते होंगे. I don't know. So Right. my main motive is just that people to know who I am, like who I really am. और बस यही, मुझे ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि मुझे अचीव करना. बहुत लोगों को ये भी मिसकंसेप्शन है मुझे एक्टिंग करनी है, बट ऐसा कुछ नहीं है. मतलब अगर कोई अच्छा But चांस would मिले you तो like take it up? that's what, if I अगर get a really great opportunity, obviously I would not drop it. But if you ask me right. that if that is my target or like motive in life, so I'd say no. हाँ. Right. Yeah. There is Shruti 2004_14 asking, and probably this is because आपने शहनाज का एक video, like you know उसके dialogues वाला video recreate किया था. She's I asking, posted a lot of videos for what do Shehnaz you ke. think? Does Siddharth and Sana make a perfect match? I have watched the entire Big Boss season, and I think they are very very cute together. Like the way Sana उसको ऐसे परेशान करती रहती है, मुझे बहुत क्यूट लगा. मैं उसकी वजह से देखती थी जब मजे वाले मस्ती वाली होती थी ना, बहुत मजा आता था मुझे देखने में. So I think they are very cute together. Yes, cute couple. There And they is, recently came up with a song also. have you seen that song? Yeah, I have watched the video. Nice song. I like the song. There is AKTK_FL asking, describe every damn fam member with one word. Oh no, 10 लोग. Okay. So मैं बहुत common adjectives use करने वाली हूँ guys, cause no, I cannot be biased in the group. So let's start with Ashna. She's very mature and caring. Unnati, she mature actually. Unnati Ashna मुझे दोनों बहुत mature लगते हैं, but Unnati is also very caring and kind. I think she's very down to earth. मानव smart, मतलब दिमाग से भी और दिखने में भी. तंजील, अभी मुझे उसका बहुत ज्यादा ये जो आ रहा है तो आई विल से सुपर टैलेंटेड. संकेत, डांसर. आई थिंक ही डांसेस वेरी वेल, एंड वो भी वापस शुरू कर रहा है अपना डांस करना वापस. सो आई एम लविंग her content these days. And Rishabh is the cutest human who exists on this earth. I have known Rishabh for the longest time, and I think he's like super adorable. He's like a little child. And कौन कौन रह गया? Arsh is funny, super funny. I think we all know that. कौन है? Addy is the Addy. coolest person I know. He is super chill about everything in life. Like उसका perspective about everything is कोई बीटी नहीं है यार, chill. So ऐसा है वो super chill. को रह तो नहीं क्या? Bruno, नहीं, I Anirudh. don't think. Okay, हाँ. Bruno is again very very talented, hands down. I think उसका makeup skills अब हम सभी देख रहे हैं. वो क्या कर देती है Oh वो ही जाने, God. फिर समझ नहीं आता वो कैसे करती है. And Anirudh is very 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 sweet. I think वो बहुत respectful है towards everyone. So yes. Okay, and Anirudh Sharma Loveberg is asking you, do you plan to do a YouTube video with your entire family? नहीं, do you plan to do a YouTube video with your younger brother? I really want to, but I think he's so camera shy that he is not willing to come in my videos. And Finally, you got your father somehow. yeah, he was, to my surprise, it was not that hard to convince him. Like I asked him once, and he said okay, and I was like क्या? तो मतलब क्योंकि अब घर But पे he was सबको too ऐसा good लगता है in यार the दो है video. कर लो. Sorry. He was too good in the video, you know, like considering even कि I like was surprised पापा कि usually इतना. को पता नहीं होता कि क्या Exactly. prizes I was होते हैं. surprised myself. And he was like कि मम्मी मुझे ये बताती थी and all of that. It was ये really मम्मी तो funny. मुझे चीट करती है फिर. वो 700 रुपए का Uh, करती है.
There is Ashi is live asking the same question about your brother. Ki please ask her to make a video with him. Then Mumbai वाला question है again हाँ. जो हमने बात करी. Then official Yashi is asking कि were you when is your music album with TK coming? Okay, so I think by now everybody knows that we shot a music video together, but because of this lockdown thing, I think it's getting very difficult for everything to happen because number one, Right. that channel जिसपे वो जाना था, that channel has to be launched yet. So there's gonna be a launch party and everything because obviously they're not gonna launch it just like that घर पे बैठे बैठे. So all that has to happen and then एक दो सॉन्ग जाएंगे and then there's our song. So I think अभी थोड़ा time लगेगा. Even I'm waiting for it very badly. But guys, I there have is hope seen because gist of the video. there is hope because they've already shot for it. So I'm sure jaldi release होगा because there was Yes, somebody आएगा else तो of also course asking आएगा. the same thing. हाँ ठीक है but Video like सबर का फल will be मीठा. yes. मैं खुद There बहुत is. चाहती हूँ कि जल्दी हो जाए. Have you seen some like clips and all of the song? I have seen the entire video over a video call. Like, so अच्छा. it's like very, very nice. I don't want to give it away too soon, but it's just looking forward to it. That's all. There is goddess Ashi Khanna saying, please speak something in Punjabi. Love I you, think all AK. of my fan pages are here. Hi, all. पंजाबी मुझे पंजाबी बोलनी नहीं आती तुम्हें पता है गाइस वैसे मैं हूँ पंजाबी बट मुझे समझ आती है बोलनी नहीं आती है मुझे बस वही आता है और कितना तुसी दसो वधिया ये सब ही आता है मुझे बोलना. Okay, there is user Unoon asking, do you only shop online and in malls या फिर you have a craze of shopping on streets? I'd say कि मेरा कोई ऐसा फिक्स कुछ नहीं है. इफ मतलब मोस्टली माई शॉपिंग इज ऑनलाइन. इफ यू हैव सीन माई हॉल्स आई मोस्टली डू ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादा से ज्यादा. स्ट्रीट शॉपिंग मैं कॉलेज में बहुत ज्यादा करती थी. लाइक आई यूज टू गो टू सरोजनी एवरी वंस इन अ वाइल फॉर कॉलेज क्योंकि कॉलेज में ऐसा होता है ना पहन के फेंक दो वही सीन रहता है. बट कॉलेज में जाती थी सो बट उसके बाद से स्ट्रीट शॉपिंग का इतना मुझे मतलब सरोजनी जाने में अब आलस आता है मुझे. अब ऑनलाइन बैठे बैठे जो मंगाना मंगा लेती हूँ. बाकी मॉल्स में मैं कम करती हूँ. ज्यादातर ऑनलाइन रहता है मेरा. There is Nick Nack asking, this is so interesting. Ask her if she can do a play date of Benny and Leo. Oh, I would love that. I would actually love that, but I'd have to take Benny. अभी मैं खुद तो घर से बाहर नहीं जा पा रही और बेनी को मुंबई ले जाना तो अभी दूर की बात है. So, but yeah, I love that idea. Probably someday. Plan that soon. Okay, now we are going to play a game of three. I will give you some genres, like categories. You have to tell me your top three amongst them. So Okay. first is junk food. Garlic bread, chips, pizza. Pizza toppings. I don't. मैं margarita खाती हूँ, but if you ask one topping, it has to be baby corn. That's all. Or chicken maybe. That would do. Places in Mumbai. I तीन haven't. मैं जब जाती हूँ ना मुंबई मैं इतना घूमती नहीं मुंबई में सिर्फ इन लोग के साथ रहती हूँ तो मैं क्या बोलूँ. You बस can होगा. name those places. कि इसका घर हो. अच्छा मानव का घर, वर्ली ऑफिस, आशना का घर. The only three places Okay. I've been to every time I go to Sweets. Mumbai. Sweets, काजू की बर्फी, my favorite. I don't think मनन. अच्छा काजू की बर्फी, plain बर्फी also I love and I also like gulab jamun. Lovely. There is goddess Ashi Khanna asking you sweet or spicy. Sweet. I cannot handle very very spicy food. Like थोड़ा spicy तो चलता है वो अब इंडियन की खून में होता है रग रग में होता है but बहुत over spicy I cannot handle. मेरे को बहुत मतलब लगता है. Okay, shows like series and all of that. Okay, so सीरीज के बारे में तो मैं सीरीज सिर्फ फ्रेंड्स देखी हूँ and अभी recently I've started Money Heist because of the hype that it has gotten. तो अभी सीरीज का I would just say Friends and Money Heist क्योंकि वही देखी है मैंने. मैं ज्यादातर मूवीज देख लेती हूँ कि यार सीरीज में ना मुझे इतना वो होता है. अब जैसे मैंने अभी स्टार्ट करी है तो मुझे देखनी है बैठ के पूरे पूरे दिन में 9 घंटे बैठ के सीरीज देख रही हूँ.
क्योंकि मेरे को वो बस मुझे मतलब देखना आगे क्या होता है। मूवी ऐसे है, 2 घंटे में खत्म क्यूरियोसिटी. खत्म काम. एग्जैक्टली, आई एम वेरी क्यूरियस, सो दैट इज व्हाई आई डोंट प्रेफर वाचिंग सीरीज. बट इट्स ओके, अब There मेरा इतना is इंटरेस्ट है तो मैं देख रही हूँ. Sayyada asking traditional or Indian. सेम तो होता है दोनों. Am I missing out on anything? वेस्टर्न और Probably ट्रेडिशनल पूछना traditional होगा. or Western. हाँ. आई थिंक बोथ, बिकॉज मैं कभी कभी इस मूड में होती हूँ, कभी कभी उस मूड में होती हूँ. सो Right. ऐसा कुछ आंसर नहीं. हैव यू सीन फोमो? ओह यस, सॉरी, मैंने फोमो शॉर्ट्स पे देखा है. दैट इज नॉट लाइक फ्रेंड्स और उसकी बराबरी का नहीं है यार वो. अच्छा है बट ठीक है. Okay. Top three movies like Bollywood movies. Yeah. ये सबको पता होगा, ZNMD, ये जवानी है दीवानी, एंड थर्ड व्हाट वुड डियर जिंदगी. Are आई you like वॉच a complete like Bollywood buff types या कंप्लीट. फिर अच्छा आई लव like you बॉलीवुड लाइक. complete dialogues? नो, इतना भी मैं वो नहीं हूँ कि मुझे एक एक डायलॉग याद रहे, बट आई लव बॉलीवुड. लाइक लोगों को लगता है ओवर ड्रामेटिक, आई लव ओवर हाँ. ड्रामेटिक. मतलब मुझे मजा आता है देखने में. आई लव बॉलीवुड सॉन्ग, आई लव डांसिंग टू बॉलीवुड म्यूजिक, सो आई थिंक इट्स ग्रेट. Raj_Goswami is asking पाव भाजी या पानी पूरी. पाव भाजी, सॉरी, पहले ही सॉरी बोल रही हूँ, लोग मुझे चढ़ने वाले हैं, बट पाव भाजी. Neha is asking YouTube or Instagram. Suddenly this has become this or that. Yeah, but that's very difficult, I cannot answer that. I think YouTube. Right. You know, I was talking to Mumbaikar Nikhil, the YouTuber, yesterday, Yeah. and he said कि मतलब बहुत सारी ऑडियंस है टिकटॉक इंस्टाग्राम पे भी, बट यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जो थोड़ा ज्यादा लाइक लोग सीरियसली लेते हैं या फिर थोड़ा Exactly. ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है एंड पीपल वांट टू गेट इनटू यूट्यूब. True. डू यू आल्सो हैव समथिंग लाइक दैट कि मुझे यूट्यूब इसीलिए करना था बिकॉज आई कैन गिव आउट मोर इन्फॉर्मेशन? That's what I said. Not about information. I just want people to know the real me. Like, not behind what is that Instagram filters, Instagram edits. Because Instagram is a whole different world. We all know that. Instagram पे जो है वो जो दिखता है वो नहीं होता है. So, and I'm being very honest like right now. So, Instagram पे मेरा image लोग सामने I know अलग उठ के आता होगा. And YouTube पे अलग उठ के आता होगा. So, I started YouTube because I wanted people to know how I really am. Because YouTube पे you cannot pretend, you know. If you are You posting will end up videos and saying then something, right? yeah, because if जो you're आप doing two usually videos बोलते and हो. quitting, that's a different thing. But if you're continue, I like it's been 1.5 years on YouTube now, so I think it's like अलग है. मैं इसलिए चाहती हूँ कि लोग कनेक्ट करते हैं यूट्यूब से ज्यादा, लाइक क्रिएटर से ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं थ्रू यूट्यूब. Right. There are so many questions, and I'll put it on the screen. There is Vaishnavi and so many. Like I think वो जो पूरा जो एक Q&A का वो होता है ना, वो इसी क्वेश्चन से भरा हुआ है. और हेयर केयर आई थिंक मुझे रूटीन. भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है. सो आई वुड से गाइस, आई स्वेयर आई एम नॉट किडिंग, आई डोंट डू एनीथिंग फॉर माई हेयर. मेरे बाल दिखने में अच्छे लगते होंगे क्योंकि मेरे बाल बहुत लॉन्ग है. मैं कभी भी शॉर्ट हेयर में बहुत कम रही हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज लव्ड माई लॉन्ग हेयर. So the only thing that I do is oil my hair once in a month. That is the only hair care tip I would like to give you guys. अगर तुम मुझसे पूछो तो, because that's the only thing I personally do. Otherwise, I think I'm blessed with the ऐसे बाल. मतलब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं अपने बाल. But the only thing is I don't have volume. But that is because of the hair coloring Like and the everything. straight also. Yeah, my hair are naturally straight, so. But we've seen your mom, so I think you get it from her. Yeah, that's what I think. I'm genetically blessed. Right. There was Jyoti asking you, do you have any phobias? Just a second. Hair mask. Okay, guys. Please contact Rishabh for all the organic home remedies that you want for your hair, skin, whatsoever. Rishabh has it all. He's going Okay, to go fear. live with us, I think, in a few days. So Yeah. we'll ask him. Okay, so fear. I think I'm very claustrophobic. That's the only fear I have for now. Like if anybody asks me, claustrophobia, somebody answered. Oh, the boy. हाँ, अनन्या. क्योंकि मैंने पहले बात True. करी है इस बारे में. बिकॉज इट्स लाइक आई गेट वेरी स्कैर्ड टू गेट कॉट इन छोटी छोटी जगह. मुझे बहुत सोच के ही वो होता है मुझे बहुत. Right. Okay. And last जो Game of Three का category है is drinks. What are the top 3 drinks that you like? um
thumbs up. मैं बहुत बच्चों का आंसर करूंगी guys because I don't like alcohol. ऐसा नहीं है I haven't tried alcohol, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, but I don't like the taste of alcohol. बहुत गंदी. So first is thumbs up. I love orange tang flavor and कोल्ड कॉफी. शिट, हाउ कैन आई फॉरगेट. कोल्ड कॉफी के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है. मैं रोज 2 बार कोल्ड कॉफी पीनी ही होती है मुझे, वरना मेरे को कुछ होता है दिल में. Right. Very There is important. Ashi's life writing. Name any 3 of your fan pages. FC Ashi Khanna is life, Goddess Ashi Khanna, 3. 6 लिखा था उसने तो. आशी माय वर्ल्ड. मुझे ऐसे फैन पेजेस के नाम सबके ऑलमोस्ट याद ही हैं क्योंकि You know, you ग्रुप posted बना. on your story that you filmed something like, you know, with the fan pages ka thing, Yeah. but It was the something went going wrong. undercover as a fan page. Yep. Hmm. I Is haven't that posted. coming? Yeah. Of course, I haven't edited yet. But I अच्छा. shot it like 1-1.5 हो गया मुझे शूट करे वो. So I am gonna post it after the quarantine snacks वाला video because I am trying to post 2 videos per week. So दोनों वीडियो आ जाएगा Interesting. next week से पहले तक. I'm sure you must have seen Ashna wala video also. Yeah. जो That's right. she did. Yeah. There is if you where is Benny? People are asking where is Benny? I think he's in mom's room. अभी वो यहाँ होता तो वो पागल है. वो मेरे रूम में आता तो बाहर जाने के लिए बोलता है, बाहर आता तो मेरे रूम में आने के लिए रोता है. पागल. समझ नहीं आता मुझे उसका. कुछ भी करता How रहता है did पूरे you दिन. did he manage to go in that tent wala house which you prepared for him? Don't ask. Like he doesn't like sleeping in his bed. So in winters he was sleeping there because ठंड लगती होगी जो भी. But अभी तो right. I don't think वो देखता भी. उसके टॉयज पड़े रहते हैं सारे उसमें भरे हुए. So it was so difficult to make him sit there even for 2 minutes. Like he's a rebel. You know, I was like कि यार please यार 5 मिनट बैठ जाता. I would have gotten to see some cute pictures जो like थोड़े वो Exactly. Instagram type मैंने pictures पूरा होते हैं. लाइट वाइट लगाया था. मैंने बोला यार फोटोज खींचूंगी. उसने कुछ नहीं खींचने दिया मुझे. बहुत इरिटेट हुआ वो. But even is he also getting थोड़ा restless, you know, because नीचे जाने नहीं मतलब मिल रहा होगा to on a long walk or something. I think I usually take him to the terrace like रात में. तो इतना नहीं because he has always been a very quiet doggo at home at least. मतलब Right. खेलेगा सब कुछ करेगा. बाग सिर्फ मतलब नहीं I don't think he's getting restless because of that. Although he loved roaming around drive पे जब मम्मी जाती थी, मम्मी ले जाती थी उसको. So he really loved that. बहुत excited हो जाता था. So I think he's Right. surely missing it. But अभी behavior में वो change नहीं दिखा मुझे उसका. And you know, because you are a pet owner, I would want to ask you क्योंकि initially when the lockdown started and even now we are reading कि you know pet owners are abandoning their pets. Yeah, Like I few read of that. them जिनको like knowledge नहीं है कि you know इससे नहीं फैलता. Have you read something about that? Of course, I've read a lot of articles about people doing that, and I felt so sad कि मतलब first thing तो how could they even do that. अगर मुझे पता होता कि ऐसा होता भी है dogs के तो then also I could not take that step कि just Right. abandoning my dog anywhere. Although I really don't get it how people do that because अगर आपने कोई responsibility ली है तो और बिना knowledge के यार बिना knowledge के तुम्हें पता भी नहीं है अभी कुछ है या नहीं. पढ़ो तो सही न्यूज Right. में जब लिखा है कि they cannot transfer the True. disease to you. So I think it's really illiterate on people's part to do that. There is Goddess Ashi Khanna asking you your favorite Disney princess. I love Disney as a whole. I think पूरा Disney मेरी मतलब Disney is my vibe. So मैं एक choose नहीं करूँगी. Like I cannot. There I is love okay. everyone. So now I'm going to give you some lines. So basically, like who is the one from Dan Okay. Fam? ठीक है. Okay. So first is the one who has all the tea, like you know, like gossip or news and all of that. ऋषभ. ऋषभ बहुत ज्यादा आंसर होने वाला है इस Really? पे. Yeah. I think मतलब it all of us doesn't come know exactly across. the same things.
because we discuss it over. So हाँ. सबको सेम gossip मालूम ही होती है, तो एक नाम लेना तो मैं ऋषभ का ले लेती हूँ, वरना तो सबको पता होता है सब कुछ. The one who is the laziest. Me. Really? Myself and I. Yes. I'm very lazy. अभी आजकल तो I'm surprised कि I'm getting up every alternate day and making content. I think maybe that's because it's required. But otherwise तो हाँ. I'm very lazy at home. मैं पड़ी रहती हूँ सिर्फ. The one who is always well dressed, like prim and proper, हमेशा. कभी भी मिलो. I think Anirudh and Sanket both. They're always tip-top. Right. The one who is always making plans. यहाँ चलते हैं, वहाँ चलते हैं, ऐसा कुछ ये करते हैं. Tanzeel and Unnati. They are very fond of going to the movies and everything. So I think उन लोग को मतलब वो ऐसा है कि उनको घर पे रहना पसंद नहीं है दोनों को, सबसे ज्यादा वो बाहर निकल रहे हैं. तो I think I'd name The them. one who is a party pooper, like अरे बंद करो, नहीं करते party वार्टी. Let's just like be us, like Arsh. ourselves. Really? Arsh I like, thought तो like he यार comes बैठते across हैं, as छोड़ो, कि बैठते हैं यही चिल करते हैं. मतलब अर्श इज लाइक जाना होगा तो वो जाएगा भी, ऐसी बात नहीं है, बट अगर उसका मन नहीं है ना तो ऐसे बोलो छोड़ो भाई, रहने दो, बैठते हैं घर पे चिल करते हैं. सो इट्स अर्श. आशी डायनेस्टी ने भी पूछा है, the one who is always sleepy. स्लीपी मृनो. आई कैन नॉट बिगिन टू टेल यू. वो लड़की कहीं भी सो सकती है, उसको आप बैठा दो चेयर पे, वो चेयर पे सो जाएगी यार. वो ऐसी है, she Really? can sleep anywhere and we have been so jealous of her at times when we could not sleep trips पे. कभी कभी we have been so jealous that पीछे देखते थे मृनु 5 मिनट में सो जाती थी कहीं पे भी. I think you वाओ, went to टैलेंट Turkey or चाहिए. somewhere. या तो वहां पे भी एयरपोर्ट पे like she had a good वही तो, nap. she sleeps anywhere and everywhere in 5 minutes. Goddess आशी खन्ना पूछ रही है, one who has the makeup fetish. Murunu. I think we all know that. Okay. Next is the one who is super picky with food. Me again. I don't eat vegetables. I don't eat मतलब वेजिटेबल्स नहीं खाती सारी, तो इससे मेरे आधी ऑप्शंस कट जाते हैं. नॉन वेज में ओनली ईट चिकन, वो भी बहुत कम. सो आई थिंक आई एम वेरी वेरी Right. पिकी एंड आई एम वेरी वेरी बैड एट इट कि मैं बहुत कम, मेरी ऑप्शंस बहुत कम रहते हैं खाने के. Veera is asking the one who loves to party. ऐसा कोई वो नहीं है कि कोई पागल है कि पार्टी करनी है, बट इफ आई हैड टू नेम वन, कोई है नहीं. ऋषभ का कभी कभी ओवर मन हो जाता है पार्टी, जब पार्टी करते हैं. वो घर पे भी पार्टी कर सकता है, मतलब करता ही है वो. 2 लोगों में भी पार्टी And कर लेगा वो. games. गेम्स एंड पार्टी, लाइट्स आउट. There is damfam.universe asking the one who is a foodie. फूडी. आशना एंड मी बोथ, मतलब हम जब भी साथ होते हैं Ashna हम said पूछते रहते हैं MNV, मतलब मानव is a foodie because वो ज्यादा experiment करता है. हाँ. बल्कि मानव would be the last name that would come into my mind because मानव is मतलब अब तो नहीं फॉलो कर रहा डाइट, बट जब वो डाइट फॉलो करता था हाँ. उसकी 4 चीजें होती थी जो वो खाता था, मतलब वेरी लिमिटेड फूड. सो मतलब हाँ वो ट्राई कर लेता है, बट फूडी Like he's more experimental. हाँ. हाँ, he is more experimental, but if I say passionately foodie जो है वो आशना है. MNV love is asking the one who cries in every movie. I actually had that question most likely to video of mine. Me, Arsh and Manav were playing, so I answered अपना खुद का and Arsh and Manav answered Arsh का. So that's when I got to know कि Arsh is also the same who cries in movies while watching movies. जबकि मेरे को बिल्कुल लगा नहीं था, but in that video I got to know कि Arsh is also very emotional while watching movies. So I'd say me and Right. Arsh. Tishia is asking the one who is good at cooking. Manav. I think he's हाँ. been killing it with his dishes True. these days. वो मुझे बहुत hidden talent एकदम बाहर आया है. रोज स्नैप आती है मानव की ग्रुप पे, आज ये बनाया. वाओ, न्यू कुक. The one who is always energetic. संकेत. I don't know. मतलब अगर वो मूड उसका सही है ना तो वो एनर्जी रहेगी उसमें. मूड पे डिपेंड करता है. If he is in a good mood, he'll be very energetic.
One who can, Nimisha is asking, the one who can watch Netflix 24/7. Me again. I think that's all of us. Like if given a chance, we can watch Netflix. मतलब पूरे दिन घर पे. Okay, this is funny. The one who snores while sleeping. I don't think anybody does that because पहली बात तो मैं सबको सोते हुए देखा नहीं है. But I don't think anybody snores. जितना I know. No Right. one. The one who is extra excited. कोई भी चीज को लेके थोड़ा मतलब कहीं जाना है तो एकदम excited. संकेत. 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 Excitement and energetic same one and the same thing. So उसका हाँ. excitement energy के फॉर्म में ही भारत है. Sassy Hazel is asking, the one who can talk continuously. Talk. I think बहुत लोग हैं यार. ऋषभ, even आशना can talk, even I can talk बहुत ज्यादा. आशना, ऋषभ, me, सब बात कर लेते हैं हम सब. It's a बहुत part of your बातूनी हैं. job also. Yeah, exactly. I think we have developed that habit of talking too much. True. Trisha is asking, the one who is short-tempered. बहुत सोचना पड़ेगा किसी को मुझे इसके गुस्सा लिए नहीं क्योंकि आता. आता है बट शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं बोलूंगी. लाइक छोटी सी बात पे Right. कुछ ऐसा हो जाए. I हाँ. don't think I'd name anyone. Is there somebody, the one who can get angry, like जिसका गुस्सा थोड़ा मतलब खतरे वाला है? वैसे तो मानव को गुस्सा आता नहीं है इतना जल्दी, बट अगर आ जाए तो आई थिंक वो फुल गबरू मोड में आके धाड़ धूड़. बट Okay, मैंने the उसके one, गुस्से में ऐसा देखा नहीं है. बट the आई one नो who कि is a उसका गुस्सा slow बहुत. eater, like धीरे धीरे खाना लेके मतलब एंड तक. ये भी नहीं मालूम मुझे. Nobody. यार सबको मैंने, अब मुझे रियलाइज हो रहा है, मैंने इसको खाते हुए नहीं देखा, ये नहीं देखा, सोते हुए नहीं देखा, ये सब मुझे अभी रियलाइज हो रहा है. नोटिस नहीं किया मतलब कभी कोई मैंने. ऐसा नहीं होता कि कोई लाइक एंड तक सबका हो गया एंड दैट पर्सन इज स्टिल हैविंग ब्रेकफास्ट या कहीं आप कोई हाँ, ट्रिप पे आई गए हो. गेट इट बट नहीं, मैंने नहीं you देखा. never noticed. Probably next time when you go out for आई a थिंक trip you मैं can notice. बोलूंगी शायद शायद ब्रूनो धीरे खाती है. पता नहीं, श्योर नहीं हूँ मैं, बट शायद. Okay. The one who gets fuzzy while getting clicked. You know, like pictures आप click कर रहे हो and you're like ऐसे नहीं वैसे ले थोड़ा. मे बी अनी. He's very like अनी मतलब एकदम कि मुझे perfect परफेक्ट picture चाहिए. चाहिए. हाँ, नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा वहाँ उस एंगल से दे. एक्चुअली आई सीन हिम मेकिंग वीडियो, सो दैट इज व्हाई आई एम आंसरिंग, मतलब आई एम टेकिंग हिज नेम कि अनिरुद्ध इज लाइक हाँ. बिल्कुल परफेक्ट शॉट चाहिए. नहीं नहीं, वहाँ उस एंगल से, ये इसमें मेरा मुंह नहीं है, वो नहीं है. सो आई थिंक हनी. And who is the one जो maximum retakes लेता है, like एक टेक से कभी satisfy नहीं होगा. यार आई थिंक तंजील takes a lot of takes because he is never satisfied with the way his hair looks. Always, मतलब ऐसे लगता नहीं, मैं उसको उसकी हर रीटेक में ये प्रॉब्लम नहीं होती कि मेरी एक्टिंग खराब थी या कुछ था. सब सही रहता है, बस उसके बाल, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरे बाल उस टाइम ऐसे हैं, वो उसको ये बहुत प्रॉब्लम रहता है. तो आई थिंक वो इस चीज के लिए बहुत रीटेक लेता है. And fam forever, this is the last one that we'll take. Who is the clumsiest? ये तो मुझे आंसर करते हुए हंसी आ रही है. वो इतनी जल्दी हरकतें करती है कभी कभी, बहुत हंसी आती है. पागल. There is, अच्छा, this question I don't know you will answer or not, but who is your favorite member from the group? I will Lipika not is answer asking. this. I will never answer this. You'd have to go to my coffin. ये आंसर मेरे कॉफिन में मेरे साथ जाएगा. To my grave. Ishita is asking who is the most annoying. अनोइंग कोई नहीं है. कभी कभी जैसे कभी कभी तो सब इरिटेटिंग हो जाते हैं. मेरे को लगता है कि जब एक पॉइंट सैचुरेशन पॉइंट खत्म हो जाता है ना, सब इरिटेटिंग लगते हैं उस टाइम पे. अदरवाइज किसी का नेचर वाइज आई डोंट थिंक कोई इरिटेटिंग है. Right. तो Of अदरवाइज course. कभी ना कभी तो यार सब हो जाते हैं. And thank you so much, Ashi. On that note, we have come towards the end of this live. I hope you enjoyed Of this course I chat did. with us. And if like once we end this, उसके पहले if you can just take a few names of people who are writing to us नीचे. Yeah, So of course that I haven't read the comments. Why not? हाँ. Okay.
Um your favorite memory with Dam Fam, Paul Shah. I think all of the trips that we have taken together, it's very difficult to choose one because we have an amazing time whenever all of us are together. So all of the trips, I would say. We Whom see would your you face itna miss. a lot? Whom would you love to live with for 1 week? Asmita. Um, मैं रही भी हूँ एक हफ्ता आशना के साथ रही भी हूँ मतलब लोग आपको ट्रिप्स पे हम जाते तो साथ ही रहते बट इफ यू आस्क देन भाई मैं कहूंगी ऋषभ क्योंकि मुझे ऋषभ के दिमाग का थॉट प्रोसेस जानना है बहुत ज्यादा मेरा बहुत मन है यार मेरी जिंदगी का This मकसद is ये a thing now. है ओके फेवरेट ट्रिप आस्क्स Nayali Shali if that's how you pronounce it all over my favorite trip would be Bali and Maldives like just because if you You know me, love the beach. I'm a very tropical person, so I don't think uh, there's anything that can make me as happy as the ocean. So I think Maldives and Bali best trips ever. Otherwise, मेरे सारे ट्रिप बहुत अच्छे रहते हैं मैं बहुत टचवुड Well, okay what are if you you doing were. these days SP Singh hi I'm just watching a lot of movies just started a new series I'm filming a lot of videos for TikTok and YouTube and that's all Thank you so much, आशी, कि आपने टाइम निकाला और हमसे बात की. Sorry, thank We you. hope that this lockdown ends soon and we get to meet I you in hope so person too. and shoot for more content with you. Yes, for sure. And For sure. thank you to everybody who joined in on the live. And thank you, Ashi, as well. Thanks for joining in. We hope that you take care of yourself, the family, and also Benny. And yeah, Thank you. hope to meet you soon. Thank you so much. Bye Sure. bye. Thank you. Thank you guys for joining. Bye. Bye. So, guys, that was Ashi Khanna for y'all. She was super cute, and yes, she answered a lot of things about YouTube and TikTok and a lot of the content that is coming up on her channel. And yeah, that's all that I have for y'all from this live. I'm going to go live with Tanzil at 9. Actually, the live was supposed to be at 8, but due to some technical issues, we are going to now go live at 9. So, Tanzil ke live ko please join in at 9. And yeah, that's all. Till then, stay home, stay safe. The live is going to get saved, so please go watch it. And Sahar Raza is asking Rishabh के साथ live कब आओगे? Soon we are planning to go live with him as well. So stay tuned. Follow India Forums. Follow India Forums Digital. And yes, that's about it. This is Simran saying goodbye, signing off. Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment.